Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, if I am going to record any video, I am getting more disturbance from our colleague or some staff. They are coming frequently. So if there is any disturbance, don't think negative. It is happening. It is the part of our life. We are HSE professional, and we have to be alert at all times. Anybody coming, or they can ask any doubt, and we have to give a good solution with positive attitude. This is our role. So today we are going to discuss toolbox talk, welding and cutting. So my toolbox talk will start now. Do and don't. What you do and what you don't do. This is two types. So first, I'm going to talk what you do. We are required personal protective equipment. Protect other workers from flashes. Have an adequate fire extinguisher readily available. Provide fire watch at all times. Fire blanket shall be available. If required, energized fire hose shall be available. Remove combustible material from the vicinity of cutting and welding operations. Secure all connections, coupling and fittings. Inspect equipment before use. Contain sparks and slags created by welding or burning operations. Protect welding leads and burning hoses by covering or suspending. Store gas cylinders upright with the valve end up. Separate oxygen and acetylene in storage by 20 feet or a 5 feet and half an hour fire rating capacity firewall you have to provide. Clear debris from work area after work is completed. So it was you have to do those things. You cannot bypass those things. So make sure your people are aware what they are going to do there and what you are going to do there. So sometimes simultaneous operation, so you have to be more careful. So now I am going to tell what you don't do. Don't cut or weld in an area with oily rags, dust or other combustible material available nearby. Don't weld in an area unless other workers have a welding screen to protect them from the welding arc. Transport bottles with gauges installed. This is very important. The gauge will damage and the chance of can be explode. Use Don't never use worn cable. Damaged cable never use because it can be a spark and there will be big fire possibility if available combustible or flammable materials. Do not use worn hoses. Remember, if the damaged hose, it can make you problem. The acetylene, if it will go out and it will found some combustible or flammable materials and there will be ignition source, so it can be a big fire in our area and we can lose many things. Do not wear clothes of synthetic fabrics. This is very important. So if you are going to cutting, there is a special apron, foot cover, hand gloves available. You have to wear only what is available from your company. Assist anyone cutting or welding unless you are wearing eye protection. Don't assist anyone. If you are wearing for eye protection, then you can assist them. Don't leave your area of work without notifying others of the burn hazard. You have to notify the people before leaving the area, and as per our recommendation, you have to stay till 30 minutes
when your work finished, because in 30 minutes you can get some information if there will available any burning materials. Okay, don't work any area if the welding machine or your equipment is not grounded. Don't weld or cut hot tanks or pipe without proper precautions. If you are cutting tank or pipes, you remember we need special precautions for that. Don't run welding leads and burning hoses through doorways. So you have to be careful if you are going to run any cable obstructing walkway, obstructing access. It will disturb us during emergency. There will be trip hazard, people can fall, and we cannot help during emergency to more people. Don't attempt to transfer compressed gas from one cylinder to another. When you are using that time, don't transfer one to another like that. Fully close, secure the area, then you have to transfer. Don't use valve protection caps to lift cylinders. Never use that cap available because it is not certified. So you have to use belt, and the rigger, they have good idea how to lift any cylinders. तो मेरे फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। जब भी हम हॉट वर्क करते हैं तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं इंग्लिश और हिंदी में इसलिए बात करता हूँ ताकि जब भी मैं टीबीटी करता हूँ वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इंग्लिश आती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ हिंदी आती है। सो ये हमारा एक हैबिट होनी चाहिए ताकि हम कुछ भी बात करें तो मिक्स करके, कंटिन्यू इंग्लिश नहीं बट मिक्स इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी। सो उसमें क्या लोगों को अपनी बात समझ में आएगी। तो हॉट वर्क में ये समझ में आए कि सबसे पहले वर्क परमिट लेना है, टूल बॉक्स स्टॉक करना है, MSRA फॉलो करना है, फायर वाचर व थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए। जो भी इक्विपमेंट है एज पर क्लाइंट, अगर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चाहिए तो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए। सिलेंडर को कभी भी ट्रॉली के अंदर लेके जाना चाहिए, चैन के साथ सिक्योर करना चाहिए। कोई ऐसी जगह नहीं रखना है जहाँ से सिलेंडर गिरने का चांस हो, और कोई भी अगर बेसमेंट जो भी उधर ऐसी जगह हो जहाँ पे खतरा है कि वहाँ पे कुछ कंबस्टेबल लिक्विड हो सकते हैं, तो उसको कवर करें फायर ब्लैंकेट से। और फायर ब्लैंकेट भी अप्रूव्ड होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर एज पर रिक्वायर्ड होना चाहिए, मिनिमम 2 फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फायर होस भी होना चाहिए इनर्जाइड, अगर क्लाइंट का रिकमेंडेशन है परमिट के अंदर टिक किया गया है तो। ड्यूरेशन हमें फॉलो करना है, कितना हमारे पास आदमी है, एक्सेस मैन पावर उधर नहीं रखना है, जिनकी ज़रूरत है उन्हें ही रखना है। कटिंग करने के बाद हमें वेट करना है कम से कम आधा घंटा, ताकि इसके पहले कुछ होगा तो हमें पता चलेगा। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है HSC ऑफिसर का, HSC इंजीनियर का, HSC मैनेजर का, उस रिकमेंडेशन को, उस प्रिकॉशन को, उनकी बातों को आप मानना है। आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें अगर इसमें कुछ कमी है या और भी कुछ चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर इसको और भी किसी और तरीके से आप पसंद करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। थैंक यू अगेन।